Hi, Rijwan. Hello sir, how are you? I'm good, Rijwan. How about you? Fine sir. Today we will cover software inventory. So first of all, we have to understand what is software inventory. So software inventory is a process through which SCCM collects information from a machine, like what type of file system are present in your client machine based on your configured rule. So what type of file information are present in your computer means like क्या क्या files पड़ी हैं आपके कंप्यूटर में, कब बनी थी, उनकी प्रॉपर्टी, उनका नाम क्या है, उनकी लोकेशन क्या है, जो भी इंफॉर्मेशन उस फाइल की प्रॉपर्टी के अंदर मिलती है, it gathers that information. So let's take an example. This is my client machine, and in this client machine I have some files in this folder. Okay, so I have two files in this folder. So SCCM इन information को collect करेगा. वो ये नहीं करेगा कि नोटपैड की फाइल को कॉपी करेगा, नो. वो जस्ट इसकी प्रॉपर्टी पे अगर आप जाओगे तो यहाँ पे आप डिटेल्स के अंदर जाओगे. सो ये जो इंफॉर्मेशन है ये फेच करता है वो एग्जैक्टली व्हाट इज द नेम ऑफ दिस फाइल, where it is present, what is the size of this file, when it got created and when it got modified. So these type of information will fetch by SCCM. और ये आपका किस पर्पज से यूज कर सकते हो आप, ये आप एक स्पेसिफिक फाइल को अगर आपको ये देखना है कि हाउ मेनी सिस्टम्स this particular file, in how many system it has present. So at that time you can use software inventory. So let's take an example. आपकी कंपनी में कोई वायरस आ जाता है and virus is creating a such kind of file extension, and now you have to find out like how many systems are impacted through this virus. So you know, like when this virus comes in your system, then it is creating this kind of file, and now you have to find how many systems have present this kind of file. So at that time you can use this type of inventory, software inventory. So Rishi, you can't hear our voice, और आपने ये पहले डाला हुआ था मैसेज? ये पहले था क्योंकि नाउ आई कनेक्टेड थ्रू माय फोन आल्सो. वो डेस्क मेरे लैपटॉप से कुछ प्रॉब्लम थी, वो नहीं हो रहा था तो okay, no problem. So let's come on SCCM server and go to your software inventory. So how you can configure software inventory? Actually hardware inventory and software inventory is enabled by default, and you can modify these things according to your requirement. So how you can do this and how you can configure rules for software inventory, so वो चीज हम करते हैं आज. So go to click on administration part and just click on client settings. So guys, we also have to cover client settings, like what is client settings and how we can use it and what is the purpose of client setting. So client settings कुछ आपकी kind of group policy होती हैं जो आपके active directory में होती हैं. Like active directory के through आप group policies को enable कर सकते हो आपकी client machines में. By default आपकी कुछ एक templates होती हैं, client settings होती हैं. So client setting means आपकी जो SCCM की जो client machines हैं उनके ऊपर SCCM की client settings आपको change करनी है, modify करनी है, तो उस चीज का यहाँ पे डिस्कस हो रहा है. So there is a default client setting which is by default deployed in all machines, and its priority is 10,000, and you cannot increase or decrease its priority. You just can change the settings in default client settings. So default client settings Microsoft recommend करता है don't modify in your default client settings. You can create your own custom device setting or user setting based on your requirement. So let's take an example. आपने SCCM का client agent install किया in around 5,000 machines.
आप 5000 मशीन में से 1000 मशीन्स पे आप चाहते हो कि SCM हार्डवेयर इन्वेंट्री को आफ्टर एवरी 2 डे फाइंड आउट करे, फेच करे, और आपकी जो रेस्ट ऑफ द 4000 मशीन्स हैं आप चाहते हो कि उन मशीन्स पे आपकी हार्डवेयर इन्वेंट्री should fetch after every 7 days. So at that time, what you can do, you can create 2 custom device setting, and in one of the device setting, you can change the hardware inventory schedule. Like it should fetch hardware inventory after every 2 days, and then you have to create another custom device setting, and where you have to define, like in this setting hardware inventory should fetch after every 7 days. And then what you can do, you can create 2 device collection, and in one of the device collection you can keep 1000 machine, and in other device collection you can keep rest of the 4000 machines. And then you have to deploy your client settings respectively, and then you can achieve your goal. So let's learn like how we can do this. So if you open the property of default client settings, so you can see the whole settings which you can change. So in left hand side, these are the settings name which you can modify. For example, the first setting is background intelligent transfer. So this is the setting name, and when you click on this, in right hand side you can modify the setting. So background intelligent transfer bits is a service which is used to download the content from bit service. So like आप जो है यहाँ पे लिमिट कर सकते हो आपके बिट्स की सेटिंग्स को, लिमिट द मैक्सिमम नेटवर्क बैंडविड्थ फॉर बिट्स बैकग्राउंड ट्रांसफर. अगर आप यहाँ पे लिमिट करते हो, यू कैन यस और नो, थ्रोटलिंग विंडोज स्टार्ट टाइम, विंडोज एंड टाइम, लाइक आपकी क्लाइंट मशीन कब से कब तक कितना नेटवर्क बैंडविड्थ यूज कर पाए, एंड कब वो जो है यूज ना कर पाए, कब यूज कर पाए, वो सारी सेटिंग्स आप यहाँ पे डिफाइन कर सकते हो. ऐसे ही अब हम जो कर रहे हैं वो हम कर रहे हैं हार्डवेयर इन्वेंट्री एंड सॉफ्टवेयर इन्वेंट्री. सो इसके अंदर आपका एक सॉफ्टवेयर इन्वेंट्री से रिलेटेड भी एक सेटिंग्स है आपकी. सो गो टू दैट सेटिंग and see these settings. So the first setting is enable software inventory on clients. So you can do yes or no. By default it is enabled because software inventory जो होती है by default enabled रहती है आपकी client machines में, and the schedule occur after every 7 days. So you can change the settings. So just click on schedule and you can modify this setting. But right now we are not going to modify anything in our default client setting, because if you will change anything it will impact in your all machines, because the default client settings is deployed in all machines by default. So उसके बाद है इन्वेंट्री रिपोर्टिंग डिटेल्स, फुल डिटेल निकालनी है, डेल्टा डिटेल निकालनी है, प्रोडक्ट ओनली निकालनी है, इन्वेंट्री दीज फाइल टाइप, किस तरह की फाइल्स को वो कलेक्ट करे, कलेक्ट फाइल्स, ये सारी चीजें. तो हम इन चीजों को करेंगे स्टेप बाय स्टेप, बट एज ऑफ नाउ आई एम नॉट गोइंग टू मेक एनी चेंजेस इन डिफॉल्ट क्लाइंट सेटिंग्स. सो जस्ट क्लिक ऑन कैंसिल, and now just right click on free space and click on create custom client device settings. अब आपको यहाँ पे इस client settings का नाम देना है, so that you can understand for which purpose I created this setting. So right now we are creating this client settings for software inventory. So just provide the name software inventory. Okay. और यहाँ से आपको जो ये ऑप्शंस दिख रहे हैं आपको चूज करना पड़ेगा which of the client settings you want to change. You can choose more than one settings, but at least आपको एक सेटिंग तो चूज करनी ही पड़ेगी. So right now just choose the software inventory. Okay, and don't click on OK, because if you click on OK it will create a custom device setting, but it will close the setting and again you have to open it. So यहाँ से आप जैसे ही मार्क करोगे तो वो चीज यहाँ पे ऐड हो जाएगी आपकी. So आपको यहाँ पे क्लिक करना है अभी. So just click on this. अब आप इस सेटिंग्स को मॉडिफाई कर सकते हो. So yes, we want to enable software inventory, but we want to enable software inventory run after every 3 days.
4 days, 15 days, depends on you how you want to configure. Click on OK. And now यहाँ पे आपसे पूछ रहे हैं inventory reporting details. Do you want to fetch the reports only for file only, product only, full details? जो भी उसकी प्रॉपर्टी, फाइल की जो भी प्रॉपर्टी के अंदर जो भी फुल डिटेल्स, जो भी डिटेल्स मिलती है, सारी की सारी डिटेल्स को फेच करे। ऐसा नहीं है कि उसकी खाली प्रोडक्ट डिटेल्स या फाइल डिटेल्स लेके आए, नहीं, उसकी फुल डिटेल जितनी भी इंफॉर्मेशन उस फाइल के अंदर से मिल सकती है वो सारी इंफॉर्मेशन की इन्वेंट्री लेके आए SCCM। अब यहाँ से आपसे पूछ रहे हैं इन्वेंट्री दीज फाइल टाइप्स। सो गाइज क्या होता है कि फॉर एग्जांपल यू हैव 5000 क्लाइंट मशीन्स, 5000 की 5000 मशीन्स में तरह तरह की फाइल्स पड़ी रहती हैं आपके कंप्यूटर्स में, कोई किसी फोल्डर में रहती है, कोई किसी फोल्डर में रहती है, कोई किसी ड्राइव में रहती है, कोई किसी ड्राइव में रहती है। सो अगर आप 5000 की 5000 मशीनों के अंदर से आप हर तरह की फाइल की इंफॉर्मेशन की इन्वेंट्री आप लेके आ रहे हो, सो यू कैन अज्यूम लाइक it will use a lot of network bandwidth and ये जो है स्लो कर सकता है आपके नेटवर्क को। सो आप चाहते हो कि भाई एक स्पेसिफिक काइंड ऑफ एक फाइल पड़ी है, आई जस्ट वांट टू फिच द इन्वेंट्री फॉर दैट स्पेसिफिक काइंड ऑफ फाइल। लाइक आपके कंपनी के अंदर एक वायरस आ गया एंड वायरस का जो एक्सटेंशन है वो है .RNSM या कुछ भी हो सकता है। सो आप यहाँ पे उसकी इंफॉर्मेशन डाल सकते हो, भाई केवल इस फाइल टाइप की इन्वेंट्री ही लेके आए। सो जस्ट क्लिक ऑन सेट टाइप एंड देन क्लिक ऑन स्टार बटन। अब यहाँ पे आपको क्या डालना है, यहाँ पे द फाइल नेम कैन इंक्लूड स्पेस एंड द स्टार एंड द क्वेश्चन वाचक वाइल्ड कार्ड कैरेक्टर। सो फॉर एग्जांपल आपको केवल r.rnsm फाइल की डिटेल निकालनी, तो आपको वो नाम डालना है। एज ऑफ नाउ मैं यहाँ पे चाहता हूँ कि भाई जिसका एक्सटेंशन .txt है, मतलब नोटपैड की फाइल जो है, क्योंकि मेरी क्लाइंट मशीन है यहाँ पे थर्ड वाली, इसके अंदर C ड्राइव में फोल्डर के अंदर मेरी टेक्स्ट फाइल पड़ी है, .txt फाइल पड़ी है। मैं जस्ट चाहता हूँ कि जहां जहां पे भी टेक्स्ट फाइल पड़ी है केवल उसकी इंफॉर्मेशन लेके आए, क्योंकि अगर फुल इंफॉर्मेशन लेके आओगे इट विल टेक लॉट ऑफ टाइम एंड इट विल यूज नेटवर्क बैंडविड्थ, lot of network bandwidth. This is our test machine. We can do anything, we can configure anything, but if you are doing it, if you are configuring it on your production machines, then you have to think about it, right? So यहाँ पे हमने बोल दिया कि यहाँ पे हम बोल देते हैं star.txt, star.txt। स्टार मतलब वो भाई कहीं से भी लेके आए, कहीं पे भी ये फाइल पड़ी हो, star.txt। अब यहाँ पे आपने चूज कर दिया ऑल क्लाइंट हार्ड डिस्क। आप यहाँ से एक स्पेसिफिक लोकेशन भी दे सकते हो कि भाई नहीं, यहाँ पे लाइक इस पर्टिकुलर ड्राइव में से, इस पर्टिकुलर फोल्डर के अंदर से ही लेके आए, तो आप वो लेके आ सकते हो। सो मैं यहाँ पे ऑल क्लाइंट हार्ड डिस्क ले लेता हूँ और यहाँ पे एक ऑप्शन है सर्च सब फोल्डर, तो उस ऑप्शन को भी मार्क कर देता हूँ। अब बाय डिफॉल्ट ये क्या करता है, आपका जो विंडोज फोल्डर होता है और उसके अंदर से फाइल्स की इंफॉर्मेशन नहीं निकाल के लाता है ये, और जो भी चीज़ें इनक्रिप्टेड होती हैं और कंप्रेस्ड होती हैं उनके अंदर की भी फाइल्स की इंफॉर्मेशन नहीं निकालता ये बाय डिफॉल्ट। बट यू कैन, अगर आप इसको अनटिक करते हो तो इट विल फेच इंफॉर्मेशन फ्रॉम विंडोज फोल्डर एज वेल, और इसको भी अनटिक करो कि तो आप इनक्रिप्टेड और कंप्रेस्ड फाइल्स की इंफॉर्मेशन भी लेके आ रहे हो। तो बट इट विल टेक स्लो, इट विल डू स्लो योर सिस्टम अगर आप ये करते हो तो। बट राइट नाउ आई एम नॉट डूइंग दिस, सो जस्ट क्लिक ऑन ओके एंड जस्ट क्लिक ऑन ओके। अब यहाँ पे होती है कलेक्ट फाइल। सो गाइज कलेक्ट फाइल्स में क्या करते हैं वो, मैक्सिमम एक 25 MB की फाइल को आपका SCCM कॉपी कर सकते हैं, ठीक है, मैक्सिमम 25 MB की फाइल को कॉपी कर सकते हैं। जैसे अभी आप फाइंड कर रहे थे कि जो जहाँ पे भी रैंसमवेयर ये पर्टिकुलर फाइल एग्जिस्ट करती है किसी भी सिस्टम पे, उसकी इंफॉर्मेशन ले आए कि वो कहाँ पे पड़ी है, उसका डेट मॉडिफाई क्या है, डेट क्रिएटेड क्या है, वर्जन क्या है। बट राइट नाउ आप चाहते हो कि भाई वो फाइल कॉपी होके मेरे SCCM पे किसी फोल्डर के अंदर भी आ जाए, तो आप वो भी कॉन्फ़िगर कर सकते हो।
बट अगर आप ये सारी चीजें आपकी पूरी की पूरी मशीन्स पे कर रहे हो तो आप सोच सकते हो कि ये जो है नेटवर्क को भी इम्पैक्ट कर सकते हैं, बिकॉज आप इतनी सारी मशीन्स पे अगर एक स्पेसिफिक काइंड ऑफ फाइल की कॉपी कर रहे हो तो वो जो है स्लो कर सकते हैं नेटवर्क को। सो यू हैव टू थिंक अबाउट इट कि भाई आप कुछ एक मशीनों पे ये कर रहे हो, और इसकी एक लिमिटेशन है एससीएम की। सो इट कैन कलेक्ट फाइल्स मैक्सिमम, लाइक जो उसका साइज है वो 25 MB तक ही कंसिडर करता है। If you have a file more than 25 MB, then it cannot collect. So just click on star button and same thing आप यहाँ पे डाल दो star.txt फाइल, अगर कहीं पे भी है उसको कॉपी कर ले entire hard disk, और यहाँ पे एक्सक्लूड कर दे इनक्रिप्टेड और कंप्रेस्ड फाइल को। अब ये कह रहा है स्टॉप फाइल कलेक्शन व्हेन द टोटल साइज ऑफ द फाइल एक्सीड KB। ये कह रहा है कि अब अगर एक फाइल का साइज 128 KB से ज्यादा है तो उसको कलेक्ट ना करे। तो यहाँ पे आप मैक्सिमम कितना डाल सकते हो, 20 MB, 20 या 25 MB के करीब होता है। हम एक बार देख लेते हैं। सो अगर हम कैलकुलेट करें, सो ये KB में है, ठीक है। सो 1024 होता है हमारा 1 MB के अंदर KB। अगर हम 20 से मल्टीप्लाई करते हैं 20,480, सो हम यहाँ पे 20,480 डाल रहे हैं, ले रहे हैं 81 डाल रहे हैं तो देखो ये नहीं ले रहा। ये कह रहे हैं कि एंटर एन इंटीजर बिटवीन 1 एंड 20,480, मतलब मैक्सिमम 20 MB की फाइल ले सकता है ये। तो हम यहाँ पे हमने इसको बोल दिया कि भाई तू कम से कम 1024 मतलब 1 MB की फाइल हो उसको ले सकता है। ओके ओके एंड क्लिक ऑन ओके। सो गाइज नाउ यू हैव टू थिंक अबाउट, आपने जस्ट एक क्लाइंट सेटिंग्स क्रिएट करी है, यू हैवंट डिप्लॉय दिस क्लाइंट सेटिंग्स on any device collection. So now you will have to think about like where you need to deploy this client setting, because जहां पे भी आप deploy करोगे उस collection के अंदर जितनी मशीनें होंगी केवल ये उनके ऊपर अप्लाई होगी। ऐसा नहीं है कि ये केवल ये बाय डिफॉल्ट जैसे ही आपने क्लाइंट सेटिंग बनाई और सब मशीनों के ऊपर अप्लाई होगी, नहीं, it will apply only on those machines where you have deployed it. So right now we haven't deployed it because आप देख रहे हो यहाँ पे deployment में 0 आ रहा है। आप ये भी देख रहे हो कि भाई ये तो default client settings पे भी 0 आ रहा है। तो default client settings के अंदर भी 0 ही आता है, लेकिन वो by default deployed रहती है। अगर आप कुछ भी change करते हो so it will impact in your all machines. But यहाँ पे आप देखोगे अगर आपने कहीं भी deploy कर रखा है तो आप इसको यहाँ पे deployment का count देखोगे। So now let's create some collection so that we can target this client settings on that device collection. So click on assets and compliance, go to device collection. So guys हमने यहाँ पे एक device collection बनाया हुआ है Windows 10 devices static। तो इसमें देख लेते हैं कौन कौन सी मशीनें हैं हमारी। उत्तम-2, उत्तम-3, these are the 2 machines in this device collection. So हम इसी के ऊपर टारगेट कर देते हैं, ठीक है। So again click on administration and click on client settings. अब सॉफ्टवेयर इन्वेंटरी को आपने जस्ट राइट क्लिक करना है एंड क्लिक ऑन डिप्लॉय। अब यहाँ से आपको डिवाइस कलेक्शन चूज करना है। सो यस वी वांट टू डिप्लॉय this client settings on this device collection, Windows 10 devices static. Click on OK. That's it. यहाँ तक क्लियर है गाइज? ये वाला स्टेप रिपीट करना हरिंदर, ये Which जो one? आपने ये जो डिप्लॉय वाला किया। ओके सो आपको जस्ट राइट क्लिक करना है एंड क्लिक ऑन डिप्लॉय, और वो डिवाइस कलेक्शन को चूज करना है जिसके ऊपर आपको डिप्लॉय करना है। तो ये क्लाइंट सेटिंग केवल उन मशीन्स पे एप्लीकेबल होगी जो भी मशीन इस डिवाइस कलेक्शन के अंदर है। ओके आपने एक चीज और बोली थी, मैक्सिमम 25 MB की फाइल हम कॉपी कर सकते हैं। 20 MB 20 MB सॉरी करेक्ट। सो ये 20 MB लाइक दिस इज अ वायरस और समथिंग एल्स? देखो वो तो डिपेंड करता है आपने क्या रूल बनाया है सिस्टम क्या रूल के अंदर, ठीक राइट।
और अगर वो वायरस है तो वो SCCM को नहीं पता वो वायरस है या क्या है। आपने उसको SCCM को बोला कि ये फाइल अगर है और हाँ किसी भी पाथ पे है उसको कलेक्ट कर ले, तो वो जस्ट उस मशीन में से चेक करेगा इज दिस फाइल प्रेजेंट और नॉट। इफ दिस फाइल इज प्रेजेंट देन इट विल कलेक्ट। ओके, वट एवर द नेम ऑफ द फाइल, उससे कोई मैटर नहीं करता, वो तो आपको बस उसमें देखना है कि आपको कौन सी चीज कलेक्ट करनी है, कौन सी फाइल। ओनली एक्सटेंशन से ही कलेक्ट कर सकता हूँ ना। which you have specified in your rules। रूल्स, ओके। हाँ, ओनली मतलब विद द हेल्प ऑफ एक्सटेंशन वी कैन कलेक्ट द फाइल। करेक्ट करेक्ट। अब आपको एक चीज और समझनी है। आई एम जस्ट sharing a scenario and you will have to tell like what can be the possible way. We are working together. Okay, we have a team, we have a SCCM team, and guys, like Rishi is also working as a SCCM admin in this company, and Uttam and Amrinder and Rijwan is also working as a SCCM admin in the same project. Okay, so अपनी अपनी machines पे console से SCCM को access कर रहे हैं सारे और काम कर रहे हैं। So now there is a scenario कि भाई यहाँ पे हमने एक क्लाइंट सेटिंग्स कॉन्फ़िगर कर दी। फॉर एग्जांपल हमारे पास एक डिवाइस कलेक्शन है, ये वाला एसेट्स एंड कंप्लायंस, यही वाला डिवाइस कलेक्शन है, विंडोज 10 डिवाइसेस स्टैटिक। इसमें हमारी 1000 मशीनें हैं। लेट्स टेक एन एग्जांपल। अब क्या किया कि रिजवान ने क्लाइंट सेटिंग बनाई हार्डवेयर इन्वेंट्री और सॉफ्टवेयर इन्वेंट्री की। सो फॉर एग्जांपल यही सॉफ्टवेयर इन्वेंट्री की क्लाइंट सेटिंग रिजवान ने बनाई है। सो रिजवान ने यहाँ पे स्पेसिफाई कर दिया कि भाई सॉफ्टवेयर इन्वेंट्री आफ्टर एवरी 3 days फेच होनी चाहिए और ये फाइल्स जो हैं कलेक्ट होनी चाहिए। अब क्या किया, यहाँ पे हम राइट क्लिक करते हैं, क्रिएट कस्टम डिवाइस सेटिंग, एक दूसरी डिवाइस सेटिंग बनाते हैं क्योंकि ऋषि भी सेम प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं, तो ऋषि ने भी अपनी एक क्लाइंट सेटिंग बना दी यहाँ पे सॉफ्टवेयर इन्वेंट्री टू किसी भी नाम से बना दी, और यहाँ पे उसने सॉफ्टवेयर इन्वेंट्री को ही चूज करा और यहाँ पे उसने ऋषि ने बोल दिया कि भाई 3 days नहीं 15 days में फेच होनी चाहिए, और इसको ओके कर दिया। और ये वाली जो क्लाइंट सेटिंग्स है ये भी ऋषि ने क्या किया, उसी डिवाइस कलेक्शन पे डिप्लॉय कर दिया जिस पे रिजवान ने डिप्लॉय करा था, मतलब हमारी 1000 मशीन्स पे। एक क्लाइंट सेटिंग्स तो आपकी बोलती है कि भाई ये सॉफ्टवेयर इन्वेंट्री शुड फेच आफ्टर एवरी 3 days, और एक क्लाइंट सेटिंग्स बोलती है कि सॉफ्टवेयर इन्वेंट्री फेच आफ्टर एवरी 15 days, और दोनों की दोनों क्लाइंट सेटिंग एक ही डिवाइस कलेक्शन पे डिप्लॉयड है। सो कौन से वाली एप्लीकेबल होगी? कैन एनीवन गेस? सो 3 days वाली है, व्हाई? क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि वो जो उनकी जो आपस में जो उसमें हमने जो टाइमिंग जो उसमें किया है वो आपस में मैच नहीं कर रहा, बस 3 days की पहले हो जाएगा क्योंकि 3 जो दिन मिनिमम टाइम है आपके अकॉर्डिंग, मतलब वो हो जाएगा। हाँ ओके, चलो यहाँ पे ठीक है, आप वाली बात ले लेते हैं कि भाई आपको लगता है जो मिनिमम वाला है वो एप्लीकेबल हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल आपने बोल दिया कि भाई उस मशीन के अंदर से केवल star.txt फाइल फेच होनी चाहिए, और रिजवान ने बोल दिया कि उस मशीन के अंदर से star.vlc फाइल वो होनी चाहिए, कलेक्ट होनी चाहिए, या उनकी इन्वेंट्री आनी चाहिए। तो हमको उसमें से लगता है फिर वो दोनों करेगा सर। उसमें कौन सा करेगा? सर दोनों? दोनों करेंगे, दोनों दोनों करेंगे, हाँ दोनों करेंगे। ओके, ये CCM को क्या मतलब, 2 पॉलिसी हमने लगाया, दोनों काम करेंगे? नहीं। सो गाइस द आंसर यहाँ पे ये है कि यहाँ पे प्रायोरिटी चेक होगी। अगर आप देखोगे इन क्लाइंट सेटिंग्स की, सो देयर इज ए प्रायोरिटी लिस्ट। सो जिसकी भी प्रायोरिटी कम होगी वही एप्लीकेबल होगी। दोनों की एक हो गई तो दोनों की एक नहीं हो सकती। अच्छा, नहीं। अगर आप दूसरी बनाओगे सो इसकी ऑटोमेटिकली जो प्रायोरिटी होगी वो 3 मिलेगी आपको।
ठीक है, अगर आप यहाँ पे मान लो कि उत्तम भी बोलते हैं कि भाई मुझे भी डिप्लॉय करनी है क्लाइंट सेटिंग्स, ठीक है, तो यहाँ पे उत्तम ने अपना नाम दे दिया और सॉफ्टवेयर इन्वेंट्री बोल दिया, सॉफ्टवेयर इन्वेंट्री। एंड सॉफ्टवेयर इन्वेंट्री के अंदर उत्तम ने अभी बोल दिया कि ना तो 3 और ना ही 15, ये 10 डेज में होनी चाहिए। ठीक है, सो उत्तम ने भी क्या किया, यहाँ पे इसी क्लाइंट सेटिंग्स को सेम डिवाइस कलेक्शन पे डिप्लॉय कर दिया। तो देखो ऑटोमेटिकली इसको क्या प्रायोरिटी मिली, 3। सो जिसकी प्रायोरिटी सबसे कम होगी उसी की प्रायोरिटी एप्लीकेबल होगी। अब यहाँ से आप कम या ज्यादा कर सकते हो प्रायोरिटी को। फॉर एग्जाम्पल उत्तम चाहता है कि नहीं, दिस इज द फाइनल, बिकॉज वी ऑलरेडी discussed with each other and we agreed like this should be applicable, so ये वाली applicable होनी चाहिए। तो उस केस में आप प्रायोरिटी को इंक्रीज और डिक्रीज कर सकते हो। सो जस्ट राइट क्लिक ऑन इट एंड क्लिक ऑन इंक्रीज प्रायोरिटी। जैसे आप इंक्रीज करोगे प्रायोरिटी 2 हो जाएगी लेकिन एप्लीकेबिलिटी बढ़ जाएगी। ठीक है, जस्ट राइट क्लिक ऑन इट एंड क्लिक ऑन इंक्रीज प्रायोरिटी। सो देखो उत्तम वाली की क्या प्रायोरिटी होगी अभी, 2, एंड जस्ट राइट क्लिक ऑन इट एंड क्लिक ऑन इंक्रीज प्रायोरिटी। सो अभी जो एप्लीकेबल होगी सबसे कम वाली कौन सी हो गई, उत्तम वाली क्लाइंट सेटिंग्स। अगर कंफ्लिक्ट आता है कहीं भी क्लाइंट सेटिंग्स में, सो गाइज कौन से वाली एप्लीकेबल होगी, जिसकी प्रायोरिटी सबसे कम है। And you cannot increase or decrease the priority of your default client settings. ठीक है, you just can increase or decrease priority of your custom device setting. It's clear guys? I hope it is clear. Yeah, it is clear. Okay, great. So guys, now what it will do, हम अपनी क्लाइंट मशीन्स पे चलते हैं और क्लाइंट मशीन्स पे हम एक काम करते हैं, हम मैनुअल सॉफ्टवेयर इन्वेंट्री को रन कर देते हैं, बिकॉज अगर हमारी पॉलिसी जाएगी तो थोड़ा सा टाइम ले सकती है। सो सेकेंड क्या हो गया, सो इसके लिए हम कंट्रोल पैनल ओपन करते हैं अपने क्लाइंट मशीन पे एंड लेट्स क्लिक ऑन कॉन्फ़िगरेशन मैनेजर टैब। इसके अंदर हमारा एक्शन टैब होता है जिसके अंदर हमारे वो सारे एक्शन होते हैं जो एक शेड्यूल टाइम पे रन होते हैं। सो दिस इज द एक्शन मशीन पॉलिसी रिट्रीवल एंड एवोल्यूशन साइकिल। सो ये जो एक्शन होता है इट रन आफ्टर एवरी 60 मिनट, क्योंकि ये जस्ट क्या करता है, इट जस्ट कॉन्टेक्ट टू मैनेजमेंट पॉइंट एंड इट फेच ऑल द पॉलिसीज विच यू हैव मेड। तो जो भी पॉलिसीज आपने बनाई हैं वो सारी इंफॉर्मेशन कौन देता है, मैनेजमेंट पॉइंट आपकी क्लाइंट मशीन्स को। सो लेट्स टेक एन एग्जांपल कि अभी आपने क्लाइंट सेटिंग को डिप्लॉय करा इस मशीन पे। इस मशीन को कब पता चलेगा, ये मशीन जो है, हर एक जो मशीन होती है बाय डिफॉल्ट आफ्टर एवरी 60 मिनट कॉन्टेक्ट करती है मैनेजमेंट पॉइंट को। अब हो सकता है कि ये 30 मिनट पहले मैनेजमेंट पॉइंट को इसने कॉन्टेक्ट करा हो, तो अगली 30 मिनट बाद वो वाले क्लाइंट सेटिंग्स की इंफॉर्मेशन इसको मिलेगी, राइट। बट आप नहीं चाहते कि भाई 60 मिनट आप वेट करो। सो उस केस में लाइक जैसे अपनी एक्टिव डायरेक्टरी के अंदर होता है जीपी अपडेट। सो जीपी अपडेट क्या करता है, तुरंत आपकी एडी को कांटेक्ट करता है एंड फाइंड्स ऑल द पॉलिसीज। ठीक है, तो यहाँ पे आपका ये वाला एक्शन होता है, इट वर्क्स लाइक ए जीपी अपडेट। सो इफ यू रन दिस, so immediately it will contact to management point and it will try to find all the deployed policies. अभी आपने फिर उसके बाद सॉफ्टवेयर इन्वेंट्री का भी एक साइकिल है जो बाय डिफॉल्ट आपका 7 डेज पे रन होता है, बट इट डिपेंड्स ऑन योर कॉन्फ़िगरेशन कि आपने क्या कॉन्फ़िगर किया है। सो इसको भी हम रन कर देते हैं सो दैट इमीडिएटली ये वो करे। तो गाइस इसके अंदर भी कुछ एक लॉग्स फाइल होती हैं, जो लॉग फाइल आप सॉफ्टवेयर इन्वेंट्री और हार्डवेयर इन्वेंट्री से रिलेटेड फाइंड कर सकते हैं क्लाइंट मशीन पे कि भाई आपकी मशीन ने सॉफ्टवेयर इन्वेंट्री को भेज दिया है, हार्डवेयर इन्वेंट्री को भेज दिया है या नहीं भेजा है। सो उस केस में यहाँ पे आप क्या कर सकते हो, सीएम ट्रेस करके आप लॉग्स फाइल के अंदर, लॉग्स फोल्डर के अंदर
एक इन्वेंट्री एजेंट डॉट लॉग होती है आपकी, वो फाइंड कर सकते हो। तो उस केस में क्या होता है, उस केस में आपकी यहाँ पे आपको देखना होता है कि हैज इट सेंड इट्स इंफॉर्मेशन इट्स इन्वेंट्री टू मैनेजमेंट पॉइंट। सो वो आपका, और जो सॉफ्टवेयर इन्वेंट्री का जो प्रोसेस होता है गाइज, इट्स वेरी स्लो, इट्स सुपर स्लो प्रोसेस। जो रिजवान आप बता रहे थे कि यू हैव कॉन्फ़िगर्ड सम रूल्स बट यू couldn't find the information, right? yes, right, तो right. इट इज सुपर स्लो। जस्ट आपको क्या इंश्योर करना है, आप मशीनों को ऑन छोड़ दो एक दो दिन, और फिर आप देखो कि आपकी मशीन ने वो जो है प्रोसेस भेज दिया है। Okay. ठीक है, सो दीज आर द लॉग फाइल्स। Through these logs you can monitor like what's happening in backend, but it takes long time. अब ये चीज हम करेंगे, सॉफ्टवेयर इन्वेंट्री को हम रीड कैसे करेंगे, सेम टूल वी विल यूज रिसोर्स एक्सप्लोरर टू रीड द हार्डवेयर इन्वेंट्री ऑफ ए मशीन और सॉफ्टवेयर इन्वेंट्री ऑफ ए मशीन। उसके लिए आपको जस्ट क्या करना है, यहाँ पे मशीन पे जाना है। आप यहाँ पे आप इंफॉर्मेशन भी देख सकते हो गाइज कि भाई सॉफ्टवेयर स्कैन मतलब सॉफ्टवेयर इन्वेंट्री कब आई है, अभी ब्लैंक आ रहा है। ठीक है, इट मीन्स machine hasn't sent its software inventory to SCCM. That's why we are seeing blank. So just right click on it and click on start and click on resource explorer. इसके बाद आपको सॉफ्टवेयर टैब ओपन करना है। यहाँ से आपको कलेक्टेड फाइल्स, फाइल डिटेल, लास्ट सॉफ्टवेयर स्कैन, प्रोडक्ट डिटेल, यहाँ से आपको इंफॉर्मेशन देखनी है। but we will see these information in our next class. तब तक हम अपना आगे का टॉपिक हम क्लियर कर लेते हैं और इसको हम एज इट इज छोड़ देते हैं। दिस वाज द प्रोसेस टू कॉन्फ़िगर योर सॉफ्टवेयर इन्वेंट्री। तो यहाँ पे मतलब सारे डिटेल्स आ जाएंगे। करेक्ट करेक्ट। तो इसमें मतलब पर्टिकुलर ये किस सिस्टम में है उसका डिटेल्स भी आएगा ना? सॉरी, मतलब पूरा सिस्टम डिटेल्स आएगा ना, नेटवर्क के कौन कौन से कंप्यूटर पे कौन सी फाइल नहीं पड़ी नहीं हुई नहीं है? नहीं, राइट नाउ व्हाट वी आर डूइंग, वी आर जस्ट सीइंग ए सॉफ्टवेयर इन्वेंट्री फॉर अ स्पेसिफिक मशीन। जो उत्तम 3 की जो मशीन है, हम केवल उस मशीन के अंदर से सॉफ्टवेयर इन्वेंट्री को देख रहे हैं जो और आप सभी बता में रहे हो। देखने के लिए सॉरी, मतलब ऑल कंप्यूटर पे अगर मैं नेटवर्क के सभी कंप्यूटर में देखना चाहता हूँ, तो फॉर एग्जांपल एक्चुअली क्या है कि मेरी उसके लिए कंपनी में ऐसा आपको हुआ था रिपोर्टिंग सर। यूज करना पड़ेगा। अच्छा, रिपोर्टिंग में पता चलेगा वहाँ पे? करेक्ट। ओके। मेरी कंपनी में ऐसा हुआ था, जैसे बहुत सारे लोग मान लो रिमोट टूल्स यूज कर रहे हैं, ये कर रहे थे, सबसे मैं हम लोग हटवा रहे थे, हम लोगों ने किया था। ओके। मतलब डायरेक्ट हम लोग कॉल करके मतलब बोल रहा हूँ कि आपके सिस्टम में ये फाइल पड़ा हुआ है, इसको डिलीट कीजिए, क्यों है, क्या है। ओके। तो मैं वही सीखना चाह रहा था। तो रिपोर्टिंग में वो होगा, वो यहाँ पे सिंगल रिपोर्टिंग में होता है कंप्यूटर। आपका। करेक्ट करेक्ट, वो रिपोर्टिंग जी में जी। होता है। बट ये जो है हम करेंगे कल अपनी एक दो क्लासेस हो जाते हैं, उसके बाद हम इस फिर चेक डिटेल कर को लेंगे। चेक करेंगे। ठीक है, ठीक है, और वो जो बाकी की इंफॉर्मेशन है वो हम रिपोर्टिंग वाले पार्ट में कवर करेंगे। निकाल लेंगे। ठीक। So now let's cover in reporting part guys। यहाँ पे ये वाला पार्ट हमारा हो गया है, और हमने साथ के साथ ये भी सीखा कि what is client settings and how we can create a custom client setting and how we can deploy it, and what would be the applicable order like in case if any client setting will conflict. Okay, just give me a second guys, I'm getting a call from Uttam. So Uttam, you are calling? Uttam, you were calling on WhatsApp. Okay, I allow you to record the session. You can start recording.
Now let's come on reporting part, guys. So reporting exactly क्या होती है? Reporting is the main feature in SCM through which you can fetch report in any format. Like आप Excel format में report चाहते हो, PDF format में report चाहते हो, या आप HTML फॉर्मेट में रिपोर्ट चाहते हो, या आप किसी और फॉर्मेट में अगर कोई रिपोर्ट आपको पुल आउट करनी है, सो इजीली यू कैन पुल आउट रिपोर्ट इन एनी फॉर्मेट. अब रिपोर्ट मीन्स किस तरह की रिपोर्ट्स. सो गाइस, फॉर एग्जांपल you are deploying an application and now next day you have to monitor like how many machines have installed this particular application. So आपका मैनेजमेंट बोलता है कि या please share me the report and how many machines it had success and in how many machine it got failed. So at that time, what you can do, easily you can easily you can export a report, and you can share that report to your management. Like this is the deployment status. So this is just an example, guys. Like आपका पैच डिप्लॉय कर रहे हो तो पैच डिप्लॉयमेंट से रिलेटेड भी आपकी रिपोर्ट्स हो सकती हैं. If you are installing SCM client agent, so SCM client agent से भी related आपकी जो reports हैं वो हो सकती हैं. So बहुत तरह की reports आप pull out कर सकते हो SCM के अंदर. There are around 478 type of by default reports you can pull out. तो वहाँ पे कुछ templates बनी होती हैं. You just have to run those template and you can fetch information according to your reports. और आप अपनी कस्टम रिपोर्ट्स भी बना सकते हो उसमें. इफ यू नो लाइक इफ यू नो SQL query, then easily you can create your custom reports in SCM और आप उसको भी यूज कर सकते हो. एंड सेकेंड थिंग, ये आप इसका सब्सक्रिप्शन भी ले सकते हो. सब्सक्रिप्शन मीन्स लाइक आप चाहते हो कि भाई ये रिपोर्ट आपको एवरी 7 days में पुल आउट करनी पड़ रही है और इन पर्सन को आपको ईमेल करनी पड़ती है, तो आप उसको डायरेक्ट शेड्यूल ऑटोमेट कर सकते हो कि भाई आफ्टर एवरी 7 days दिस रिपोर्ट शुड बी पुल्ड एंड ऑटोमेटिकली इट शुड सेंड टू दीज पर्सन्स, और ऑटोमेटिकली इट शुड क्रिएट ए कॉपी इन दिस पर्टिकुलर पाथ. तो ताकि आप चाहते हो भाई इतने सारे पर्सन को ईमेल ना जाए, आप एक पर्टिकुलर पाथ पे उस रिपोर्ट्स को रख सकते हो और जिस पर्सन को आप अलाउ करोगे वो पर्सन जो है वहां से उसको कॉपी करके इजीली देख सकता है रिपोर्ट को. सो दैट्स व्हाई वी यूज रिपोर्टिंग पार्ट. अब धीरे धीरे जो रिपोर्ट्स हैं लाइक हार्डवेयर इन्वेंट्री से रिलेटेड रिपोर्ट है, सॉफ्टवेयर इन्वेंट्री से रिलेटेड रिपोर्ट्स है, पैच से रिलेटेड है, या आपका एप्लीकेशन से रिलेटेड है, या OSD से रिलेटेड है, या आपका मॉनिटरिंग जो आपके SCM के जो कंपोनेंट्स होते हैं उनके मॉनिटरिंग से रिलेटेड है. सो वो चीजों की रिपोर्ट्स आप पुल आउट कर सकते हो इन एनी फॉर्मेट, बट उसके लिए आपको कॉन्फ़िगर करना पड़ता है गाइज. SCM आपको कॉन्फ़िगर करना पड़ता है. बाय डिफॉल्ट जो रिपोर्टिंग है वो कॉन्फ़िगर नहीं होती. सो रिपोर्टिंग कॉन्फ़िगर करने के लिए क्या होता है, जो आपका SQL सर्वर 2014 था उसके अंदर जब आप SQL इंस्टॉल कर रहे होते थे तो एक फीचर आती थी रिपोर्टिंग सर्विसेज पॉइंट. सो आप SQL इंस्टॉल करते टाइम ही उस सर्विस को इनेबल कर सकते थे, बट अभी SQL 19 के अंदर इस फीचर को अलग अलग कर दिया गया. Now you have to download it separately and you have to install it separately. तो उसके लिए आपको रिपोर्टिंग सर्विसेज की एक फीचर है, एक सेटअप फाइल है, वो आपको डाउनलोड करनी पड़ती है, एंड देन यू हैव टू इंस्टॉल इट एंड देन यू हैव टू कॉन्फ़िगर इट, देन यू कैन व्यू द रिपोर्टिंग पार्ट. सो अगर आप बाय डिफॉल्ट देखोगे, जस्ट गो टू योर SCM कंसोल एंड क्लिक ऑन मॉनिटरिंग एंड जस्ट देयर इज एन ऑप्शन, क्लिक ऑन रिपोर्टिंग and click on reports. So by default you will see यहाँ पे कुछ नहीं आ रहा, blank आ रहा है. लेकिन अगर आप configure करते हो reporting part, so you can view the reports here.
there are around 478 by default reports comes. तो यहाँ पे अभी कुछ नहीं आ रहा because we haven't configured it. One second, guys. So now let's configure it and let's download it. So आपको ये देखना है कि रिपोर्टिंग आपका इंस्टॉल्ड है कि नहीं है, तो उसके लिए आप यहाँ पे आपका जो प्रोग्राम्स एंड फीचर्स है उसके अंदर भी देख सकते हो. जस्ट ओपन प्रोग्राम्स एंड फीचर इन दिस मशीन एंड यू कैन सी like reporting services is installed or not. So right now we cannot see reporting services feature. अगर आप SQL सर्वर देख रहे हो तो यहाँ पे रिपोर्टिंग से रिलेटेड कुछ नहीं है. And also you can see services. So if you open services.msc, then अगर आप SQL डालते हो यहाँ पे तो SQL से रिलेटेड रिपोर्टिंग से रिलेटेड SQL की कोई सर्विस नहीं है यहाँ पे. SQL Server, MS SQL, SQL Server Agent, and that's it. So we don't have any reporting services service. So now let's download it and let's install it. So उसके लिए आपको ये देखना है कि आपने already download कर रखा है या आपको डाउनलोड करना है. So मैं एक बार देख लेता हूँ exactly कि हमने कुछ डाउनलोड कर रखा है कि नहीं. आपको इसकी भी जरूरत पड़ेगी, SQL Server Management Studio. दिस इज द सॉफ्टवेयर जिसके थ्रू आप डेटाबेस को एक्सेस कर सकते हो. यू कैन इंस्टॉल इट इन एनी ऑफ द मशीन. ऐसा नहीं है कि आपको सर्वर ओएस या एससीसीएम की मशीन ही चाहिए. इफ यू हैव SQL access then you can install. If you have database access then you can install it in your client machine, Windows 10 machines, and then you can you can modify your database just after providing your SQL Server details. So what is this? So now let's download this, guys. You just have to type SQL Server Reporting Services 2019 download. SQL Server 2019 Reporting Services. So you just have to download it. The size is around 105 MB. So it has been downloaded successfully. Now just copy this file, exe file, in your SCCM machine and just paste there. Now just install it.
Whoa. Oh, sorry. We were doing in our AD machine. We had to do this in our SCC machine. So yeah, this is my SCC machine. Just right click on it and click on open. Just click on install reporting services. So yes, we want to use it for 180 days. Next, I accept. Next, and yes, we have to mark this checkbox, install reporting services only. And click on next. So by default, it will install in this path. Yes, that's fine for us. Next, yes. So now you have to guys, you have to configure it. So as of now, you just have installed it. So now we need to configure it. So just click on configure manually and customize setting and click on configure report server. Yes. So you have to click on connect, make sure all these options are coming. Yes, this is the server name where we had installed the service and click on connect. So जैसे आपको ये ऐसे connect कर देना है उसके बाद you have to configure it. So how you need to do this? यहाँ पे आपको क्या करना है, just सर्विस अकाउंट पे जाना है and built-in account. So यहाँ पे आपको another account डालना है और एक एटलीस्ट एक अकाउंट आपको यहाँ पे प्रोवाइड करवाना है so that through that account you want to manage this service. So our domain name is techie and yes, through this account we want to manage and provide the password. उसके बाद आपको यहाँ पे अप्लाई पे क्लिक करना है. जैसे आप अप्लाई पे क्लिक करोगे तो these settings should be completed successfully. Then just click on web service URL and आपकी एक virtual directory बनेगी IIS के अंदर. So this will be the name of that virtual directory. You can change it according to your name and it will be the URL by default URL. So just आपको क्या करना है, apply button पे click करना है. Now go to the third option, database. Here you can create a database. So just click on change database. And yes, I want to create a new report server database. Next. And yes, this will be the server name where I'm going to create a database and through this user, I want to do this and click on test connection. It should be success. Next. And yes, it will be the name of your database.
If you want to change it, you can do this, and by default just click on next, and that's fine. Next, and click on next. So now simply you have to click on finish, because we have successfully created this database, and you just have to monitor it like it should be completed successfully. Then just click on web portal URL, and again click on apply. So rest of the settings you can skip, because we don't have to change much. So we don't want to enable email settings and these settings. So just ignore those settings and just click on exit. Now, if you open services.msc, so you will see there will be a service SQL Server reporting services. So SQL Server reporting services, right? And if you open the property, then you can see like through this account, you can manage the service, because we have configured it through that service account. And now what you need, you just need to restart the service, guys. You just need to restart the service. And now you can verify like what's going in backend, because it will take around 30 minutes to create your uh, all the reports template, and then you will see all the report templates in your SCM console, because it takes around 30 minutes. So what's going in backend, what's happening in backend, so you can verify those things through log files. So how you can do this, just open program files, configuration manager, and logs. First of all, sorry, one more thing we left. So first we have to do that. So what we need to do that, we have to install one more roles in SCM. Sorry, I forgot about that part. But yes, we have to install sub role. Sorry, sub no, not. We have to install reporting services point role. So as of now, we just have installed a setup file that was provided by Microsoft. But right now we have to install a reporting services role in SCCM. So how we can install that role? Just open SCCM console. Go to administration tab, expand site configuration, and click on server and site system roles. So guys, through this option, you can view like how many sites, how many server you have available where you had installed different roles. So as of now, we just have one server, and that is our primary site. And in this server, we had installed 8 roles. So that's got installed by default. So through this option, you can view like how many roles, different roles are installed in this machine. So as of now, in this machine, we have installed component server, distribution point, management point, service connection point, site database, site server, site system, SMS provider. So these are the important roles are installed in this machine.
and we have to install one more role in this machine. So how you can install one more role in this machine? Just right click on this and click on add site system roles. So through a computer account, you have to are installing this role, or like through any other account you are installing this role. So right now I can install this role through computer account as well, because computer account also have admin rights in this machine, and I also can use my Sccm admin account. So Sccm admin account, just click on new account and click on browse and provide the Sccm admin account and provide the password. Click on verify and just you can try to access any of the seed folder. Test, that's okay. Okay. Now simply you can click on next. We don't have any proxy server. Next. Now from server role selection page, you have to choose a reporting services point role. So what is the use of reporting service point role? Actually, it contact to your SQL reporting services, and it will help you to manage all the templates, all the reports in Sccm. So simply click on next, and now you have to click on verify button. So it will verify your database, and now it is saying like where you want to configure it and through which service account you want to manage it. So existing account, not, it's not picking. New account, browse, Sccm admin. Okay, click on password. Okay, and click on next. And click on next. Click on close. So just refresh it and you should see the reporting services role, right? So it will take some time to configure and install this role. So till the time we can monitor through log files. So there will be a log file setup. So let's wait for a few seconds, for a few minutes, because it takes some time to install and configure this role. SRSP setup and this one. Yeah, these logs file we can verify. So now you can see on 8:36, this role has been successfully installed. Installation was successfully. So there are two error comes. So every time these error you will see, like when you install this role, and you can skip these errors. So don't worry about these errors. So now we can see our installation is successful. Okay. Now it will create all the templates, but for that you have to verify different logs. So which one? The setup. Yeah. So srsrp.log. Through this log file, you can verify like your instance or your reporting things is get created or not. So right now we can see the reporting services URL also has been created, and now we can see it has started to create. It has created data source file, and now it will start to create your templates.
So waiting for change or shutdown for 1 minute. So once it will start to creating your reporting services template, then make sure you don't restart SQL reporting services, because if you will restart services in between, then it will maybe it will not resume that process. So it will take long time if you to restart services in between while it is doing something. So just wait and don't restart services in between, and probably it should start to creating templates within minutes. Yeah. So guys, finally we can see it has started to create templates. So right now you can see like which one it has created. So this is just an example, like this is the report. Hardware 07B USB devices by manufacturer and description. So this will be the report templates, and you can fetch this report just after right click on it and click on run. But right now it is creating those templates, and once it will complete the process, then you can see all these reports in your SCM console, and it will take around 15 to 20 minutes, I guess, and depends on your system speed as well. Like if your system is slow, then it can take more time. एंड स्पेस कितना लेता है सर वो ड्राइव में? Don't take much space. जो मेरे ड्राइव में है ना वो स्पेस कम है, तो एक बार हमने ये लगाया था तो रेड हो गए थे, तो दोबारा मैं डर से ये रिपोर्टिंग नहीं लगाता. Okay. 150 GB में ही हमने सब कर रखा है. Oh, sorry. How much? 150 GB में हमने CCM डेटाबेस. 150 GB is enough for testing. नहीं, मतलब उसमें 4 सिस्टम हमने बना रखा है, सभी चीज. Okay. 4 लैब, 4 वर्चुअल मशीन अलग अलग. पूरा हाँ वर्चुअल मशीन मैंने बना रखा है. Then SSD. तब तो कम है 200. कम है इसीलिए. SCM वाली मशीन को आपने कितना दे रखा है स्पेस? SCM वाली मशीन को हमने ऐसे ज्यादा दे रखा है, जहाँ पे हमको ये सब काम करना है, मान लो पैचिंग का करना है या डिप्लॉयमेंट का करना है, इसलिए हमने थोड़ा ज्यादा दे रखा है. Okay. लेकिन अभी भी हम बोल सकते हैं बस 18 से 20 GB बचे हुए. Okay. SCM वाले में. Okay. बाकी और सब हमने मतलब 25-30 GB बस. So Rishi, I'm sorry I couldn't give much time on that day, और आपकी lab भी अभी pending है. So I will try to cover your lab so that you can start. Okay. Yes. Yeah. Thank you. You're welcome.
ये जो रिपोर्ट फाइनली फेच होंगे वो एक्सेल पे होंगे या और किसी सभी चीज पे हो जाएगा ना? No, you cannot fetch these reports in just Excel file. You can fetch these information in तो any format. Like एक्सेल कुछ मतलब एडवांस लेवल पे सीखने की जरूरत है या नॉर्मल में काम चाहिए? that depends on you. Like जो भी जितना भी आपको आता है, देखो जितना ज़्यादा आता है तो उतना तो सबके लिए अच्छा रहता है, ठीक है। बाकी नहीं इस चीज डिपेंड्स। के लिए मतलब कि सीखना बहुत नहीं, चीज है इसके लिए इसीलिए। जस्ट क्या है कि आपको रिपोर्ट्स पुल आउट करनी है एंड जस्ट आफ्टर चेंज समथिंग इन एक्सेल फाइल आप उसको इजीली शेयर कर सकते हो आपके मैनेजमेंट को। ऐसा तो नहीं है बहुत कि बड़ा अगर आपको मान वो लो बिग डीप डेटा में। अगर एक्सेल में आ जाता है नहीं तो कुछ नहीं, मतलब एक बेसिक बेसिक डैशबोर्ड ही आना बना कर चाहिए, देगा। ऐसा कुछ नहीं है। अच्छा। वो थोड़ा बहुत वी लुकअप वगैरह अगर आपको आता है तो इट वुड बी गुड फॉर यू, क्योंकि उसके लिए उससे आप जो है इजीली फिल्टर आउट कर सकते हो डाटा को अकॉर्डिंग टू योर रिक्वायरमेंट। बट ऐसा नहीं है कि इस खाली इस चीज के लिए आपको एक्सेल डीप डाइव आना चाहिए, नहीं। अच्छा अच्छा। मतलब मेनली ज्यादा क्या क्या यूज होता है, जैसे कि मान लो पिवट टेबल है, जैसे आपने वी लुकअप बताया, इसमें क्या यूज क्या होता है मैक्सिमम? आई ऑल्सो डोंट नो मच अबाउट एक्सेल। सिंपली थोड़ा बहुत मुझे भी आता है तो मेरा काम चल जाता है उससे। बट ये है कि आपको वी लुकअप वगैरह और ये सारी चीज़ें आती हैं तो इजीली थोड़ा सा आपके लिए ये हो जाता है, डिफरेंट डिफरेंट टेबल्स, डिफरेंट डिफरेंट एक्सेल फाइल से अगर आपको डाटा निकालना है तो वो आप आराम से कर लेते हो। और आप जो भी जिस भी फॉर्मेट में आपकी रिपोर्ट पुल आउट हो रही है जी। एक्सेल फाइल के अंदर, सिंपली आप उसको भी शेयर कर सकते हो आपके मैनेजमेंट के साथ। यू डोंट नीड टू चेंज एनीथिंग। आप आप बोल सकते हो कि दिस हैज बीन फेच्ड फ्रॉम SCM एंड दिस इज द डिप्लॉयमेंट स्टेटस, और जो भी जिस भी पर्पज से आप रिपोर्ट निकाल रहे हो। यही एक मेन फाइल है रिपोर्टिंग के लिए, लॉग ना, SRP लॉग के लिए। 1 second please. जी। Yeah, this log file is for monitoring like how many templates it has created or is there any problem. But other log file you can see for your software reporting services point role, like srsp setup.log. Through this log file you can verify your role has been successfully installed or not. वो लॉग। Yeah. मैंने आपका वीडियो देखकर OSD मैंने कर दिया, बहुत दिन से कोशिश कर रहा था, वो नहीं रहा था। Great. आपका वीडियो देख के कर दिया। और सेकंड वीडियो मिल नहीं रहा था मुझे, जो पार्ट 1 आपने किया यूट्यूब में, तो Okay. अभी मिल गया, वो भी सेकंड वीडियो भी आप निकाल सकते Okay. Great. हैं ड्राइवर वाला। लेकिन जैसा ही ये सिस्टम बूट हुआ, वो मेरे सिस्टम हैंग हो गए बिल्कुल। या कॉन्फ़िगरेशन तो आपको थोड़ी चाहिए। हाँ कॉन्फ़िगरेशन सब कुछ है, वो स्टोरेज का थोड़ा आया i3 भी है प्रोसेसर।
Okay. दोबारा हमने मतलब फोर्सली हमने बंद किया, दोबारा कोशिश कर रहा हूँ तो ले नहीं। Okay. So guys, finally it has successfully completed this process, and now just do one thing, just close the console, SCM console, and try to open the console again. Click on monitoring tab and just expand reporting, and click on reports. So now we can see there are around 471 reports came. Earlier it was blank, right? So these are the reports which you can pull out in any of the format. यहाँ पे आपका रिपोर्ट का नाम है और ये कैटेगरी है, राइट? और दिस इज द डेट मॉडिफाइड डेट. सो अगर आप यहाँ पे एक्सपेंड करोगे, सो यहाँ पे एक्सपेंड पे आपको जस्ट एक कैटेगरी दिखेंगी, बिकॉज एक कैटेगरी के अंदर हो सकता है मल्टीपल आपकी रिपोर्ट्स हों, ठीक है? फॉर एग्जांपल क्लाइंट पुश इज ए कैटेगरी, एंड अंडर क्लाइंट पुश category you can see that there are around 4 reports are available. You can pull out these reports in any of the format. So let's run this report, client push installation status details. So right click on this and click on run. अब ये आपसे कुछ इनपुट्स मांग रहा है. स्टेटस, भाई क्या वैल्यू आपको, फेल्ड वाली मशीन चाहिए, कंप्लीट वाली चाहिए, क्या? I want to see all status. Click on view report. Now you can see there are around 4 machines where it has tried to install SCM client agent, and in this machine Uttam-2, its status is complete, status is complete, status is complete, but in AD machine it couldn't complete, and it has tried around 30 times, and but it's not completed yet. Okay. So आप इस तरीके से कोई भी रिपोर्ट पुल आउट कर सकते हो. Now you have to pull out this report in any of the format. Just click on this button. You can pull out this report in Word format, Excel, PowerPoint, PDF, TIFF file, HTML, CSV, XML, data feed. In any of the format you can pull out this report. Just click on Excel. And click on yes. So if MS Office is installed in your machine, then you can read. In our SCM machine, we don't have MS Office, but now let's open this. So now we can see. Okay. Is it clear, guys? So Uttam, my voice is not coming. Hello guys, are you getting my voice? Yes, we are getting yours. Okay. Uttam, you can start recording again if you haven't started it.
So this was the process to fetch, to configure reports, and why we configure reports, and how we can fetch, how we can configure it. These are the categories. और जो धीरे धीरे जो रिपोर्ट्स है, जो मॉड्यूल है हमारा, उसके अकॉर्डिंग हम उससे रिलेटेड रिपोर्ट्स को पुल आउट करेंगे. Like कल हम एप्लीकेशन डिप्लॉयमेंट करेंगे, एंड व्हेन वी विल डू दिस देन वी विल सी द रिपोर्ट्स रिलेटेड टू एप्लीकेशन डिप्लॉयमेंट. सो इस तरीके से हम करते जाएंगे, जिससे हम थोड़ा सा फेमिलियर होएंगे कि रिपोर्ट्स को कैसे यूज करते हैं, और किस किस से रिलेटेड इम्पोर्टेंट जो रिपोर्ट्स हैं हमारी, उनके क्या नाम है, का कैसे हम यूज कर सकते हैं. सो आज के लिए हम इतना ही करेंगे. सो if you have to ask anything, you can ask.